for this wonderful start of the bronze medal match. Good morning, Godfrey. I hope you've had some nice party last night. Why didn't you stop the rain? Very, very good morning to you, Naveen, and a very good morning to all our viewers. Guns N' Roses would have been proud with the November rain that we are witnessing out here. Plenty of lightning, thunder yesterday night, and it's wet condition out here on the field. But absolutely, Naveen. In fact, this is a chance for Jharkhand to rectify that error that they made in the semi-finals. But again, the rain is going to play not just truant, but a very, very important factor in this match. The rain has been playing truant with us here, and if it has affected us, then it will definitely affect the team. No, I'll tell you something. In hockey, rain does not affect anybody. None of the players. As Jharkhand moves ahead, penetrates the shooting circle, but there, good defense again. Wonderful work. Yeah, because see, rain, they will play underwater, so no problem. The only problem here would have been the light, would have been how you sight the ball, because it is already 8 in the morning here in Mapsa, and the sun, of course, is gone on a vacation for today, I think. So that is why the problems might exist in just viewing the ball. Because see, hockey will not be stopped for rain, because we will any which ways water the turf and play on it, right? So this is even more a better conditions, even more a little challenging and a slippery conditions where the only challenge will not be the hampering of the game. The only challenge is how do you use with skill to pass the ball around. That's what the skill will be. Absolutely, and in fact, I think it has saved the groundsmen a little bit of effort of watering the entire place. But one factor that is going to come into play at some point or the other is the weather condition. Is it going to deteriorate or not? Because the humidity has been too much, and Goa has had thunderstorms and showers. So will it rain very heavy is the $1 million question, because it is still no sign of the sun whatsoever. And actually, you know, Naveen, I see the girls playing, both Jharkhand and Punjab, playing with a lot of enthusiasm. This is such a welcome change from the humidity that we had yesterday. The humidity was a little too much, unbearable actually. We needed the rain. Totally needed. And my very good friend Godfrey never lets go of whatever happens in Goa. He knows a way to dodge it around and say, Goa is the best place in the world to live. That's what he'll do. And the reason I'm saying that is, you said, welcome rain. We would have welcomed it in the night, not in the morning. Enough of welcoming the rain. Let the rain give us some respite, and we will probably enjoy a good game of hockey, because after this third and fourth place for the men and women, we will have the finals, the fight for the gold that's going to happen. So Gigi, enough of welcoming the rains. You tell something in Portugal so that the rain takes a break. I totally understand where you're coming from, because it's going to be a banger of a final. Karnataka, so many people rooting for them. It's going to be good to see you. Shivani is out here, so always a pleasure to see her shining and smiling face. But the story thus far is an even Steven kind of a situation. Punjab versus Jharkhand, 0-0. Quarter number 1. Just about 8 minutes left on the clock. What we don't want to see is another tie breaker. So that is something that I don't want to see again. But there are chances. The way Jharkhand played
in the yesterday's semi-final. I was like, can we give away? Can we give away the slot to Madhya Pradesh? Because wonderful work from Madhya Pradesh in the shootouts. Penetration, goal! First goal for Jharkhand. Beautiful work. And that is what they really wanted. All the team goes out there and enjoys. Naveen, you just spoke a little too soon. And normally my friend Naveen is good at predicting, but right now it is Jharkhand that draws first blood. In just about 7.5 minutes, Jharkhand is leading 1 goal. Just look at that. Amazing, amazing deflection. And it was at a height. That is what made it even more special. Great. The rain is still on. But it's right now not raining for Jharkhand. The girls should be pleased with themselves in the blue and yellow jerseys. But Punjab not holding back. Trying to penetrate the circle, unable to do so. Ball still in possession with Jharkhand. All that is fine, Gigi. Tell me, did you speak to the meteorological department? I had said this once, I'll say it again. The two most unpredictable things in Goa, the heat and the rains. So that will stand, and I will stand by that fact, and no amount of prediction can work in these two factors when these two factors are concerned. Again, penetration of circle done well. Punjab keeps the danger away. Good work, good work. And no problem there on that occasion. As much more effort now from Punjab, because Gurjeet Kaur will have to manage out the defense very nicely. The goal already hurting Punjab a lot, so they are one step behind the bronze medal even. They wouldn't have even forgotten that rather heartbreaking loss. I don't want to call it a little disappointing loss. It was a heartbreaking loss against Haryana yesterday in their semi-finals. It went to the penalty shootouts, and they could not convert one, and then they could not block two more from Haryana. That is how Punjab have found themselves in this situation of the third and the fourth place. And the only respite for them is enjoy the rain, which the Haryana team have been, devoid of. That's all. Absolutely, and in fact, right now the story of the moment is Jharkhand on the attack, but managed to be warded off by Punjab. Let's see if they can do something about this, because they seriously need to mount an offense out here. They do not want to enter the second quarter trailing behind by 1 goal, because that is definitely going to be a psychological disadvantage. And when you have the rain like this and you're soaking wet, the jersey that you're wearing, this is going to affect you not only physically but also mentally. And that is a right point, but I'll tell you what, these jerseys, they have been made to soak up that sweat. They need to soak up that bit of extra water and give out a little, just give out a little more comfort to the player. Not too much, a little more, because I'll tell you why. Because when they play under the humid sun, the only aspect will be getting out there and playing it out with the sweat. So when you're sweating out like that, it will be a point to say, okay, I've got the sweat under control, but the dripping sweat will be managed out with these kits. So it's almost, I won't call it waterproof, but it's almost there to support the player and keep them a little comfortable. That's what it is. But and also it's very light, but nothing for the goalkeeper there. Nothing for the goalkeeper. She's got every bit of protection. Lightning still continues. I think I heard it's more in the place where we stayed there, Gigi. I think it is more on Mapsas region comparatively from anywhere else, because Panjim or say even Margaon or even Kalangot, they have not experienced this kind of lightning, because the lightning is fine and then the thunderstorm strikes.
That always brings me back to my science classes where light travels faster than sound. Well said, Naveen. In fact, the information that I've been getting from my colleagues is that Margao, the rain had stopped, and same was applicable to Mershes, a place in Panjim, very close to Panjim. So, so that could possibly be good news. But right now, seeing the rain intensify, I don't know if that is going to be a possibility. Call your colleagues and ask them not to lie on a Tuesday, Wednesday morning. You know, not to lie. Because they can say, no, I don't speak the truth on Wednesdays. They can come back with that answer to you, Gigi. As Jharkhand now really wants to keep Punjab at bay, at least in this quarter where 2.5 minutes is still on the clock. You can see the screens completely soaking out. A big shout out to all our lensmen as well for covering it up very nicely and then providing us these visuals. There, circle penetration done. Nobody to take the pass. Nobody to take the pass. Let's go back and see that on the replay. I was not expecting the replay for the first foul on the goal because we are all just starting off and lucky that we had the replay. This once again is a big essence to go in. Should have been much closer for Alka Dungdung. Should have been going in from the center. It's not there around. Alka has been performing so well. I was really surprised that she missed that one. And it was a good pass. One of the best passes that I've seen at least since morning. So this gives the break that Punjab needed, and maybe they could utilize this opportunity and forge ahead. But no, Jharkhand is constantly attacking. They are moving forward. And moving forward like how? They have understood the game of how will Punjab react to certain situations. They know that the initial bite will always put them behind. As once again now Deepthi Topo struggles around. Yeah, there Punjab is more concentrated on the defense now. As that's a nice through pass that's going in. That's a lovely run through there for Rajvinder Kaur. She will want to enter the circle out there. She does penetrate the circle. Watch out for that foul coming in. That's a corner. I was telling you, watch out for the foul that is coming in. They did not watch out. And of course, Alka Dungdung right there in the firing line. Let's go back and see that. Right through from the run. Right through from Rajvinder Kaur in that left flank. It's just got so very intense. We're just waiting in for the replay to probably come in. We will be, waiting to see how Rajvinder Kaur went in with that run in. And then Alka Dungdung was right there in the middle. Check this out. Nice inflicting of the foul. Lovely work. Deepthi Topo also in the firing line. Now, corner. Punjab have a big chance. Gone into inject this one. 1 second on the whistle. We'll get the permission now from Ruchika Wankede. Okay. Injects. Trap. Push. No drag. Hit. And lovely save. Good work. Corner persist of the stick lifting. Yeah, Alka Dungdung lifted a stick over the head. Corner will persist. Let's go back and see that it's a weak injection first up. And then Navjot Kaur did not have the idea on passing off. Good through pass that came in to Reeth. But what a save. Nice one from Sonal Minch on the occasion. As a whistle has been given in. Injection this time better. Trap. Drag. Off target. Completely way off target. So 2 opportunities lost by Punjab, and they are still trailing behind. It's almost the end of the first quarter and still trailing by 1 goal. Jharkhand have been doing well in this quarter, but they'll obviously need something better than this. Yeah, they do, no doubt. So 1 goal under that clock that's kicking in, as we do still have 5 seconds more on the clock. Yeah, lovely. That's the hooter. That's the hooter for the first quarter. As Jharkhand will have 1 up against Punjab.
Fight from Jharkhand have definitely taken advantage of the situation of this beautiful weather out here. और ये दूसरा क्वार्टर यहाँ पर शुरू होता हुआ पंजाब के पोजीशन था, बैक पास किया, गेंद को लेकर सेंटर लाइन से पार किया है। पंजाब के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग टीम है, नेचुरली गॉडरे चांसेस थे, लेकिन कल हरियाणा ने इनको टोटली आउट क्लास किया। Yeah, absolutely. It was an amazing match, and Haryana played so well, so full props to them. But right now what I enjoyed was seeing Rajwinder do that dribbling bit, poetry in motion, dude. Gee. That is the way it should have been. But again, let me say this, that Jharkhand have tried to correct all the errors that they made yesterday. एब्सोल्युटली, सबसे बड़ा फर्क जो झारखंड का ये है कि यहाँ पर उन्होंने स्कोर किया है, उन्होंने खाता खोला है और पहले ही क्वार्टर में जो दबाव बना लिया है। जानते हैं कि फाइनल में नहीं पहुंच पाए, लेकिन थर्ड प्लेस के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहा है और सबके मन में ऐसी भावना ज़रूर थी कि पंजाब बहुत एग्रेसिवली इस मैच में आएगा, क्योंकि डिसअपॉइंटेड थे हरियाणा से हारने के बाद। लेकिन झारखंड ने जो आते ही अपना खाता खोला है, उससे जो एडवांटेज यहाँ पे मिला है झारखंड को दूसरे क्वार्टर में, एक काफ़ी शील्ड है। थर्ड प्लेस के लिए मुकाबला चल रहा है। मापशा के पैडम हॉकी टर्फ पे हम मैच देख रहे हैं। ये 37वें राष्ट्रीय खेलों के संस्करण में अंतिम दिन है आज हॉकी का, और फाइनल मुकाबले विमेंस हॉकी में और मेंस हॉकी में खेले जाने हैं आज के दिन में। और दिन की शुरुआत हमने की है इस ब्रॉन्ज मेडल मैच के साथ और बहुत सारी बारिश के साथ। Well said, actually. This is the only difference that we have seen, major difference I would say, that we have seen in the past 8 or 9 days, that the weather conditions have reversed completely. But right now, let's see, Punjab can do something about this. Can they reverse the situation of trailing behind and at least equalizing? जी, रिवर्स फ्लिक मारने की कोशिश की थी वहां पर ताकि कंडीशंस रिवर्स हो सके पंजाब की, लेकिन नेवरदलेस गेंद अभी भी पंजाब के पोजीशन में। यहाँ पर दूसरा क्वार्टर, इस क्वार्टर में मैं समझता हूँ गॉडरे यहाँ पे पंजाब को स्कोर करना होगा अगर वो थर्ड प्लेस को आई कर रहे हैं। नेचुरली दे आर आइंग इट, लेकिन उतनी कोशिश, उतना आक्रमण यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। पोजीशन भी ज़्यादातर झारखंड के पास रहा है, लेकिन इस वक्त गेंद लेकर आगे बढ़ी है खुद नवजोत कौर। Yes, Navjot, being the striker that she is, would like to take this ahead. But I also feel one thing, Akshay, is they seem to have been affected by that loss from Haryana, whereas Jharkhand have picked up the pieces and moved ahead, because you see they're attacking. But Punjab, that they are also a team that you really can't count out, because in this quarter it's been Punjab all the way. एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पे पंजाब की जो पोजीशन है इस क्वार्टर में शुरुआती 2-3 मिनटों में तो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, और झारखंड नेचुरली उस मोमेंटम को आगे लेके बढ़े हैं। डिसअपॉइंटेड रहे झारखंड वाले, बहुत अच्छा खेल दिखाया था। जिसने भी वो पूरा मैच देखा होगा उस 60 मिनट में वो जानता है कि झारखंड मध्य प्रदेश से अच्छा खेला था, लेकिन टाई ब्रेकर्स ऐसे होते हैं कि उसमें मैच किसी के पाले में भी जा सकता है। अब साइड लाइन पर झारखंड एक बार फिर से यहाँ पर गेंद लेके आगे बढ़ा, लेकिन इंटरसेप्शन किया पंजाब ने। जैसा आप बात कर रहे थे, पंजाब का थोड़ा सा टेम्पो अप है, हालांकि अभी भी पोजीशन यहाँ पर झारखंड के पास थी। शॉट मारा था यहाँ पर, सर्कल पेनिट्रेट किया था, एक बार अकेली खिलाड़ी थी वहाँ पर अलका डुंगडुंग, उनकी स्ट्राइक प्लेयर है अलका डुंगडुंग झारखंड की, लेकिन बहुत सारे डिफेंडर मौजूद वहाँ पर। Absolutely, Alka has been playing very well, and one thing that you have to say, that Jharkhand have tried to create opportunities, though despite all that have managed to score only one goal. They would try and get another goal at least in this quarter. जी, गॉडरे, यू आर अ लोकल गाय, ये बारिश का क्या आसार लगते हैं आपको? ये होती रहेगी क्योंकि लगातार रात से बारिश पड़ रही है, यहाँ पर बिजलियाँ कड़क रही हैं, और मौसम जो है वैसे तो काफ़ी रोमानी और सुहाना है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग और खेल के हिसाब से दिक्कतें हमें पेश आ रही हैं यहाँ। Absolutely. In fact, Goa is quite famous for its monsoons being, continuous rains for a few days, not a few hours. Keep in mind. Now, of late, the weather that we have been seeing in Goa is the rains have been unpredictable at any given month. So,
I really can't predict that this rain is going to stop at any given point of time. It could continue, it could stop. As I said earlier, as I mentioned to Naveen, there are two things that have no certainty in Goa: the heat and the rain. तो गॉड्रिक, क्या सामान्य रूप से यहाँ पर नवंबर में पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में बारिशें होती हैं गोवा में? No, if you had to ask me this question 5 or 6 years ago, I would have said no. But for the past 2 years, the trend has been that it can rain anytime. And speaking about rain, this is an opportunity in the rain for Punjab to capitalize on a penalty corner. They have got a penalty corner. Let us see if they can capitalize on this. मनप्रीत कौर वहां पर ड्रैग फ्लिकर हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लिकर हैं पंजाब के लिए, इंजेक्ट करेंगी गेंद को। देखना होगा पंजाब भुनाता है कि नहीं इस मौके को। और ये सेफली ट्रैप किया, साइड पास किया, जोरदार प्रहार किया था यहाँ पर कमलप्रीत कौर का ये प्रहार था। लेकिन देखिए किस तरह से हेड्स डाउन है पंजाब के, वो डिसअपॉइंटेड अभी तक लग रहे हैं पिछले मुकाबले की हार से। Absolutely, Manpreet gave a brilliant injection, good trapping, but again Jharkhand on the attack. यहाँ पर भी देखिए रितु रानी के पास गेंद थी पंजाब के लिए, लेकिन कितनी आराम से वहां पर झारखंड ने उस पोजीशन को छीना है। साइड लाइन पर गेंद को आगे लेकर बढ़ रही है। निशा मिंज के पास गेंद थी, निशा मिंज ने बैक पास किया यहाँ पर दीप्ति कुल्लू को। दीप्ति कुल्लू अभी भी गेंद को संभाले हुए हैं, देखना होगा सर्कल पेनिट्रेट करती है कि नहीं। साइड पे पास दिया यहाँ पर निशा मिंज को, निशा मिंज को टैकल कर रही कॉर्नर में यहाँ पर पंजाब की खिलाड़ी प्रियंका वहां पर कोशिश कर रही थी पंजाब के लिए गेंद छीनने की। And possession with Punjab. The rain has intensified a little bit, and so has the Jharkhand attack. Let's see if Punjab can mount some sort of offense. गॉडरे देखिए थर्ड प्लेस के लिए मुकाबला हमेशा से ही थोड़ा सा एक मन में मलाल जरूर लेकर आता है, क्योंकि वो टीमें थर्ड प्लेस के लिए खेलती हैं, थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच चल रहा है ये विमेंस हॉकी में, जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और सेमीफाइनल में परास्त हुई। और वो जो सेमीफाइनल की हार होती है वो कुछ घंटे दूर ही हुई होती है और बहुत हर्ट करता है खिलाड़ी को, एक टीम को, उनके मनोबल को। Absolutely, and I do believe that Punjab is showing the strain, whereas in yesterday's match, Jharkhand had performed very well against MP, but were very unfortunate. That's why they do not want this match to end in a tiebreaker. And that's why they are forging ahead. Once again, Jharkhand on the attack. This is exactly what was needed. We'll take a look at the replay. A penalty corner awarded to Jharkhand. Pramodini Lakra had done a good dribble, got it into the circle, and let us see how that infringement was caused. Good pass. Oh, it was the legs of the Punjab defender. Alright, and Jharkhand is all set to take this corner. Let us see if they can capitalize on this. दूसरे क्वार्टर का लगभग 7 मिनट का खेल हुआ है, यहाँ पर 8 मिनट 7 सेकंड बचे हैं और पेनल्टी कॉर्नर। जोरदार प्रहार यहाँ पर, लेकिन इंटरसेप्ट अच्छा किया, वहां पर वापस मिली थी अलबेला रानी टोपो को गेंद, लेकिन गुड डिफेंस पंजाब के लिए। Actually, Albela just held on for a millisecond. She just held on for a millisecond, and that gave the Punjab defender a chance to stop that. See, there's nothing wrong with this. It was the trap was fine. See, she just held on a little bit. Exactly. देख सकते हैं आप यहाँ पर रिप्ले में किस तरह से ये मूव निगेट किया था। पंजाब को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कुछ मैदान को वहाँ पे खाली करना चाहिए। बहुत सारा जमावड़ा है वहाँ पर खिलाड़ी का, राइट फ्लैंक बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन बारिश में इस तरह के स्कूप करना शायद थोड़ा संभव हो, लेकिन रिसीव करना बहुत मुश्किल होने वाला है यहाँ पर। Yes, absolutely. I do see a scarcity of Punjab players on the right side. Yes, you're absolutely right on that particular point. But look at Jharkhand. Jharkhand, again, Pramodini Lakra.
passes it on. वो डिफरेंस भी साफ नजर आ रहा है गॉडरी यहाँ पर कि जिस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है झारखंड के खिलाड़ी और वो पंजाब के खिलाड़ियों को लॉपसाइडेड कर देते हैं अपनी शार्प पासिस से। ये यहाँ पर क्लियरली नुकसान दिखा रहा है पंजाब की टीम के लिए। Yes, that is an observation that is evident out here in the field. Look at how evenly placed all the Jharkhand players are, whereas the Punjab players seem to be just focusing on a few players and all of them are towards the left hand side. यहाँ पर भी कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे रेशमा सोरांग ने राइट फ्लैंक से लेफ्ट फ्लैंक शिफ्ट किया। जैसे ही पंजाब के खिलाड़ी थोड़ा सा इधर खाली हुए वापस उन्हें सेम साइड लाइन पर पास किया था उनके साथी ने। Yes, brilliant passing. Again, I think it's a good display of passing out here, changing flanks. Good interception by Punjab. दीप्ति कुलू का जोरदार प्रहार था लेकिन इस मौके पर पंजाब ने अच्छा इंटरसेप्ट किया और पोजीशन अपने पास ली। अब उन्होंने फ्लैंक बदले हैं यहाँ पर, अब फ्लैंक्स बदले हुए यहाँ पर पंजाब के साथ वापस थोड़ा सा सेंटर में दिया है। गेंद लेकर खुद आके बढ़ रही है प्रियंका। Gurjeet is moving ahead. Can she mount some sort of offense? And she sends it. It's back with Gurjeet. It went on the sidelines. She is looking for someone. Back pass. Changing flanks. गॉडरे थोड़ा बात करते हैं अपने खेलने वाले दिनों की, जब हम शुरुआत में मैचेस खेला करते थे। नेचुरली हर खिलाड़ी का, हर टीम का ये उद्देश्य होता है कि फाइनल में पहुंचे और अपनी टीम को विजयी बनाए। लेकिन इस तरह के मुकाबले जब सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं, क्योंकि आप एक पायदान, केवल एक पायदान फाइनल से दूर होते हैं और जब आप सेमीफाइनल में परास्त होते हैं आपको हार का सामना करना पड़ता है, तो जैसा कहते हैं यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के थर्ड प्लेस के लिए मैच खेलना। Yes, absolutely, because every team plays for gold. The rest is incidental. Someone, I don't recall who had said this, but this is, yeah, I remember it was Ben Johnson, the sprinter, the Canadian sprinter, who said this, that everyone, all athletes, they compete for gold. When it comes to this situation, but let us say Jharkhand have been playing very well and they seem to be playing like as if their life depends on it. Great passing. जी बिल्कुल आपने ठीक कहा यहाँ पर। और दीप्ति टोपो यहाँ पर साइड लाइन पर गेंद लेकर आगे बढ़ी थी और अभी भी पोजीशन यहाँ पर रजनी करकेटा के पास। झारखंड के खिलाड़ी नेचुरली एक बहुत सॉलिड खेल दिखा रहे हैं यहाँ पर। बहुत अनएक्सपेक्टेड टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी लोगों को, क्योंकि सब ये उम्मीद कर रहे थे हरियाणा पंजाब के सेमीफाइनल के बाद, जब पंजाब वो मैच हारा था, कॉम्प्रिहेंसिवली हारा था, लेकिन जोरदार तरीके से वापस नहीं आ पाया है। Keep in mind that Jharkhand had actually played very well. They lost, it was in a tiebreaker, and it's always, I've always said that tiebreakers are not a display of team skill, rather than that it is individual skill and managing pressure at that moment. Fact of the matter is, Jharkhand have realized they do not want this to be in a tie, and that's why they have scored the first goal. They are definitely trying to score another goal. Now let us see if Punjab can mount some sort of offense. They are moving ahead. विमेंस हॉकी एक बहुत अहम पड़ाव पर है हमारे देश में। जिस तरह से एनकरेज किया जा रहा है हर स्पोर्ट्स में विमेन को, उनकी पार्टिसिपेशन को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में और लाइफ में विमेन पार्टिसिपेशन की जो इक्वालिटी है समय के साथ बढ़ी है। और यहाँ पर भी जिस तरह का प्रदर्शन विमेंस हॉकी में और दूसरे इवेंट्स में हमें देखने को मिला है, तारीफ करनी होगी जिस तरह से, जिस दिशा में समाज और देश हमारा बढ़ रहा है। Yes, absolutely, and seeing these young women perform so well on this stage, this platform, this event is a big boost for women empowerment. We'd like to see, and I think this is a good forum for ladies to participate and prove their mettle, because I firmly believe that women have really the strength and mental fortitude as much as anyone else. Absolutely. विमेंस हॉकी का ये थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए ब्रॉन्ज मेडल मैच चल रहा है मापसा के पेडम एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम से। आज हॉकी का अंतिम दिन है और सभी खेलों का भी लगभग यहाँ पर समाप्ति होगी, जिसके साथ हम कल
9 तारीख को यहाँ पर क्लोजिंग सेरेमनी के साथ इस 37वें राष्ट्रीय खेलों के संस्करण को गुड बाय कहेंगे। और ये ब्रॉन्ज मेडल मैच पंजाब बनाम झारखंड, दूसरा क्वार्टर, अंतिम 2 मिनट बचे हैं यहाँ। And also let's talk about the next match that would happen. That is between Haryana and MP. That is one match that I really want to see because the Haryana team have been performing so well. MP, okay, I do agree that maybe the performance was not so great yesterday. It was a little lackluster against Jharkhand. They were lucky enough to get through in a tiebreaker. But they are dealing with Haryana and for the gold medal. जी हाँ, हरियाणा का मनोबल बढ़ा होगा इस पर पूरा। गुड इंटरसेप्शन। और एक बार यहाँ पर फिर से झारखंड का हमला, जोरदार प्रहार करने चाहिए था वहां पर, लेकिन समय था उनके पास, एरिया भी था, स्पेस था पूरा, थोड़ा सा चूक गई वहां पर, गलती कर गई प्रमोदनी लाकरा। बट प्रमोदनी हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल एंड आई थिंक शी नीडेड मोर प्लेयर्स आउट देयर। जी, हालांकि वहां पर पंजाब के डिफेंडर भी ज्यादा मौजूद नहीं थे। गेंद को थोड़ा सा अगर पीछे लेकर आती सर्कल की तरफ और एंगल बदल कर प्रहार करती रिवर्स फ्लिक में, संभवतः अच्छा होता उनके लिए। Yes, absolutely. She could have maneuvered that ball, but then as we can, it's very easy to sit here and speak, but it's a pressure that the players feel, and especially in such a critical match like this. And right now it is Jharkhand once again. No surprise out there with possession of the ball. It is with Punita. She passes it behind to Reshma Saurang. Changing flanks. Again back to Reshma. And thus ends quarter number 2 with Jharkhand leading 1-0. It's going to be a 10-minute break, but the story so far, Jharkhand are still leading. This has been a goalless quarter. Jharkhand had scored 1 goal in the first quarter, and that automatically gave them the mental boost and morale, obviously. So as we end the second quarter, the match score is Punjab 0, Jharkhand 1. And this is the women's hockey, Punjab versus Jharkhand, third and fourth place. So it's for the bronze medal. पहले 2 क्वार्टरों की समाप्ति के बाद झारखंड यहां पर 1-0 से Hello, Manisha Mohan this side, international boxer. I am world medalist and Asian medalist. So यहाँ पे पार्टिसिपेट करके गेम्स में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। नेशनल गेम्स देखो, ये हमारे लिए स्टेज होती है, जैसे नेशनल चैम्पियनशिप होती है, ऐसे ही ये बहुत बड़ा गेम है हमारे लिए, जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने हरियाणा स्टेट को। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा गेम है। बॉक्सिंग तो मैं कहना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे बाहर जाना। मैं ऐसे गाँव से आती हूँ, मटोर से, जिसमें लड़कियों को बाहर भेजना भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने ऐसे ही ग्राउंड में मार पिटाई से शुरू किया था। तो कोचेज़ ने बोला कि आप बॉक्सिंग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी लड़कियाँ नहीं थी। तो चोरी छुपे मैंने ऐसे ही 3-4 महीने किया बॉक्सिंग, विदाउट घर में परमिशन लिए बिना, और ऐसे करके ही स्टेट चैम्पियनशिप हुई, जिसमें मैंने मेडल जीता और न्यूज़ में खबर आई। तो उसके दौरान मेरे घर वालों को भी पता चला कि मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ और मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ। तो ऐसे मेरी बॉक्सिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे इंस्पिरेशन बॉक्सर मनोज कुमार हैं, वो मेरे कैथल ज़िला से ही हैं। हरियाणा में सभी स्ट्रॉन्ग तो वैसे ही हैं तो हरियाणा की गर्ल्स भी बहुत सारी आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स में बहुत अचीवर हैं लड़कियां बहुत सारी। और वैसे स्पोर्ट्स में जैसे आप मैरी कॉम को देख सकते हो, इतनी बार वर्ल्ड चैम्पियन है, और उनको देख देख के तो और ये होता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग है गर्ल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके चाइल्ड होने के बावजूद भी वो इतना कर रहे हैं, तो उनको देख के भी थोड़ा फीलिंग ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो वी कैन मैनेज। मैं थैंक यू करना चाहूँगी एसोसिएशन को, गोवा की, और हमारे हरियाणा स्पोर्ट्स स्टाफ जितना भी हमारे साथ आया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेज है हमारे लिए। गेट सेट गोवा। हाय नमस्ते, माय नेम इज़ प्रहलाद पांडा और मैं गोवा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमारे नेशनल गेम्स में।
I've been in boxing from last 12 years, or I've played many state levels, out of which I'm continuous champion. Excelling in the passes and attacking from different flanks. Now from the left flank. पोजेशन भले ही यहाँ पर पंजाब के पास हो, लेकिन दबाव पूरा बना के रखा हुआ है झारखंड के खिलाड़ियों ने। और ये इतना प्लेजेंट साइट है मेरे लिए, इसलिए नहीं कि मैं किसी एक टीम को फेवर करता हूँ, लेकिन जब भी आप किसी अंडरडॉग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पर झारखंड को सभी ने राइट ऑफ किया हुआ था, लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुंचा। अनफॉर्चुनेट रहे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टाई ब्रेकर में उन्होंने मैच हारा मध्य प्रदेश के साथ। हालांकि अब मध्य प्रदेश फाइनल में हरियाणा के साथ खेलेगा, देखना होगा मध्य प्रदेश वहां कैसा परफॉर्म करता है विमेंस हॉकी के फाइनल में। लेकिन झारखंड की तारीफ करनी होगी, हमने उस सेमीफाइनल में भी देखा था दूसरे मुकाबले में कि किस तरह से खिलाड़ियों का तालमेल हो, चाहे उनका पासिंग टेम्पो हो, चाहे उनकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी, भले ही वो कैपिटलाइज ना कर पाए हो वहां पर, लेकिन फिर भी झारखंड एक सुपीरियर टीम थी वहां पर, हमने ऐसा महसूस किया वहां पर। तीसरे क्वार्टर का ये खेल, झारखंड के खिलाड़ी प्रमोदिनी लाकरा इस वक्त इंतजार में है कि गेंद को आगे बढ़ाएं और अपने साथी को पास करें। साइड लाइन पर गेंद लेके आगे बढ़ी है पंजाब की खिलाड़ी। खुशी होगी किसी भी टीम को नेचुरली अगर यहां पर ये मेडल जीतेंगे, दोनों ही टीमें प्रयास तो पूरा करेंगी, लेकिन जैसा मैं अक्सर कह रहा हूं कि झारखंड ने जो दबाव बना के रखा हुआ है, झारखंड ने जो मूड सेट किया है, जो टोन सेट किया है इस थर्ड प्लेस के मुकाबले की, वो काबिले तारीफ है। और साइड फ्लैंक पे एक बार फिर से गेंद बदली, यहां पर साइड फ्लैंक पे दीप्ति टोपो गेंद को लेकर आगे बढ़ी है। और मूड बदलने की बात पर, कमेंट्री बॉक्स का मूड बदलने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं नवीन शौरी। नवीन, मैं बात कर रहा था गॉडरे से भी यहाँ पर कि किस तरह से इस थर्ड प्लेस के मुकाबले में नेचुरली दोनों टीमें सेमीफाइनल के हारने के बाद यहाँ पर खेलती हैं। एक उदासी तो जरूर रहती है मन में, लेकिन फिर भी मेडल का तो मैच है ही, थर्ड प्लेस का ये मुकाबला चल रहा है, तो दोनों टीमें चाहती हैं कि ये प्लेस उनको मिले। Definitely. Thank you so much, Akshay. Yeah, the pressure definitely is on from Jharkhand, but Punjab will want to not repeat the same thing what they did yesterday. You know, not allow the opponent to come back. Corner, 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 right. Whether I change the mood or no, Jharkhand do not want to change this mood. They want to keep on attacking Punjab. और ये और फ्रस्ट्रेट करेगा पंजाब के खिलाड़ियों को यहाँ पर। Yeah, let's go back and see on that foul because it's looking like as if she's had a hit on her cheek. Oh yes, it was a big one. Unintentional, but it was a big hit. Rajni Karketa hitting out that big defender Gurjeet Kaur. Hope she's all okay. Gurjeet Kaur, she's a strong player. I hope that hit would have not jolted her jaw or anything. Oh, unintentional. That's why the corner also has been taken back. Should have gone in for a corner. Let's go back and see that replay again. Let's go back and see that replay again of that hit that was there. Not this. Not this. Okay, we all know Ruchika Wankhede will run, but the replay of the hit on the stick should have stayed on with the corner. It was not a stroke, so it was okay. But Ruchika Wankhede just being very sweet enough to cancel it out after a little discussion there against the decision that she gave with Deepa instructing. Let's go back and see that replay, please, where the hit was taken. We'll once again say it was intentional or unintentional because Punjab deserved that sort of a corner. Let's watch this here. The ball was there. Should not be lifting the stick like that. Come on. Come on. Rajni Karketa. You're inside the shooting circle. The defenders around. You can't keep lifting the stick like that. In my books, Akshay, it should have been a corner. वेल थोड़ा सा रजनी करकेटा को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की वजह से मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि जब उन्होंने स्टिक उठा ली थी तब वहां पर गुरजीत कौर चार्ज की थी। नेचुरली स्टिक उठाने से पहले आसपास जरूर नजर दौड़ाई थी उन्होंने कि हाँ मैं स्टिक उठाने की पोजीशन में हूँ। No, but the simple rule is don't go for the lift of the sticks above the knee inside the shooting circle. Simple. That is the rule. So if they can keep that in mind, and I know that was not intentional. I'm not saying it is intentionally done, but
I'm saying the corner should have been there, because that is kind of an infringement on the sportsman spirit. That's all. So that, where at least Punjab should have gone in and tried the corner. It's not the stroke, as we saw against Karnataka, what happened, but it was at least a corner where they had that opportunity to come back and convert. जी बिल्कुल ठीक कहा, नियमों का पालन करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप जब सर्कल में हैं, स्टिक इतनी ऊपर उठाना ना सिर्फ फाउल है बल्कि एक दूसरे को हर्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये सख्ती है। जैसा हमने कल हरियाणा के मुकाबले में भी देखा था, पंजाब के साथ ही यहाँ पर कप्तान रानी रामपाल से वो चूक हुई थी शॉट लेते हुए। उन्होंने बोर्ड को हिट नहीं किया था, नेट में गेंद गई थी, जो शुरुआत में उन्होंने सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन रूल इज रूल। उनको खुद भी कई बार ध्यान नहीं रहता खिलाड़ियों को हीट ऑफ द मोमेंट में कि हमें क्या करना है। Yeah, totally. Yeah, Rani Rampal today will be tested again with her temperament, with her skills. She needs to understand, she needs to maintain the decorum of being a senior player. She should not be talking to everybody in a tone that will probably go against her on a decision-wise, especially against the umpires. I have been hearing a lot of things, but yeah, nevertheless, let's see how she will come out in the gold. But here, the bronze medal match with, I understand, testing conditions, slippery conditions. Yeah, we can still hear the thunder out here in Mapuche. मनमीत कौर वहां पर पंजाब के लिए गेंद का पोजीशन रखा होता, लेकिन गेंद बाहर गई थी, नवजोत ने संभाला उसको। मौसम बहुत खतरनाक है। हम जानते हैं कि फाइनल्स के मुकाबले आज खेले जाने वाले हैं मेंस हॉकी और वुमेन्स हॉकी में, और धमाकेदार ये दिन होने वाला है, लेकिन बिजलियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ धमाके होने वाले थे, ये हमें अंदाजा नहीं था। Yeah, totally. It's continuing from I think 1 a.m. in the night. From 1 a.m. the thunders and the lightning haven't stopped here in Mapusa, because it's been that kind of a start to the weather where it's going to persist for somewhere around 7-8 days. ये देखिए रिप्ले में यहाँ पे किस तरह से अलका डुंग गेंद को लेकर बढ़ी थी और प्रयास अच्छा था, वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाई। अगर कोई डिफ्लेक्शन होती तो अच्छा मौका होता था एक बार यहाँ पर झारखंड के लिए 2-0 से आगे बढ़ने का। As the roof has opened up in the commentary bench, we will see that corner again on the replay very soon. Yeah, let's go back and see that. Yeah, there. Oh, the jump was not timed enough. The idea was right, but Priyanka was right there, receiving the jump on her legs out there. As the injection now will happen from Jharkhand, Alka Dung will have the option. Injects, trap, and goes out. Goes out. It was not intentional, I understand, on that note. And good that Ruchika Wankhede actually went out there and changed her decision previously. The trap was not right. The trap there was not right from Deepthi Kulu. That was a problem. Yeah, when तीसरे क्वार्टर का ये खेल देख रहे हैं हम पंजाब बनाम झारखंड का।
झारखंड ने जो पहले क्वार्टर में शुरुआत में गोल कर लिया था, उसके बाद से पंजाब भले ही एक दो अवसर जरूर मिले हैं कॉर्नर में भी और दूसरी तरह से खेल बनाकर, लेकिन स्कोरिंग करने में सफल नहीं रहा है। ब्रॉन्ज मेडल का ये मुकाबला विमेंस हॉकी में एक कांटे की टक्कर होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें मौसम का भी खेल रहा है। इतनी ताबड़तोड़ बारिश हो रही है कि नेचुरली कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, और शुरुआत में ही अगर हमले हो जाए और गोल स्कोर हो जाए तो फिर प्रतिद्वंदी को थोड़ा सा मनोबल पर प्रभाव पड़ता है और संभलने में मुश्किल भी आती है। हालांकि तीसरे क्वार्टर में अभी भी 6 मिनट 20 सेकंड का खेल बचा है और इसके बाद चौथे क्वार्टर में भी पूरी संभावनाएं होंगी। यहां पर पूरी कोशिश करेगा नवीन, झारखंड कम से कम एक गोल और कर ले ताकि उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाए यहां पर इस थर्ड प्लेस के मुकाबले में। For that they'll have to come back and score that equalizer soon. Punjab, they want to increase that intensity now, because after this, the fourth quarter, it's going to get a little more easier, as the rain now has kind of subdued, but the effects of the rain will still persist. I mean to say, the effects of having that cold wind blowing across, it would have given the players a little more getting used to the conditions with the rain, but then when the rain stops, it can become a little more on that cool wind that is blowing across. एक बार फिर से पंजाब लेकर आगे बढ़ा है, सर्कल पेनिट्रेट करना चाहता है, जोरदार प्रहार किया था यहाँ पर राजविंदर कौर ने, लेकिन डिफेंस अच्छा दाद देनी होगी। उस मनोबल की वजह से भी और अदरवाइज भी डिफेंस अच्छा रहा है झारखंड का। ये हमने मध्य प्रदेश के साथ मुकाबले में भी देखा था दूसरे सेमीफाइनल में। Yeah, let's see that replay again on the defense work. Good work inside the shooting circle. And let's go back and check it out immediately. Yeah, that's the effort. You see how strong it was on a stroke that was being taken in from inside the circle, and also had that issue going out there. लगातार बारिश के बीच में ये खेल हो रहा है और दर्शक इसका आनंद भी ले रहे हैं, और टेलीविजन सेट पर बैठने में तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। घर पर गर्म गर्म चाय की प्याली या कॉफ़ी के साथ इस मैच को देखना। थर्ड प्लेस का ये जो मुकाबला चल रहा है विमेंस हॉकी में, सफलतापूर्ण एक संस्करण यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का एक और समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ। The rain should at least support for it to be really a big success, because enough the rain has worked over time. And now on that left flank it is getting a little active as Pramodini Lakra, the goal scorer, comes across, penetration circle, no. They were appealing for a corner, no. Ruchika Vankade says, no, that's not right. As again, it's very important to watch this. Again there, Pramodini Lakra went in. Oh, right, she was inflicting the foul. Yeah, the idea was completely right, and also the appeal was correct against Priyanka. Priyanka was there, but Ruchika says no, it was not an infringement. I'll not give you the corner. And from that right flank now, it's getting a little active. Where Deepthi Topo, back passes, big shot taken in. Oh, wanting to deflect. They're slipping and they're trying to get on their knees as well. Okay, that's good. देखिए रिप्ले में किस तरह से यहाँ पर प्रहार किया था रेशमा सोरांग ने, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं मिल पाई वहाँ पर। हालांकि साथी मौजूद थी, पंजाब के डिफेंडर के ठीक सामने खड़ी थी, अगर गेंद को कनेक्ट करती तो दूसरा गोल होता डेफिनेटली। Alvela Rani Topo there, yeah, she should have just stretched her left stick a little more so that she could have got that deflection, but yeah, it's not easy. Not easy, as these conditions are something that they need to really get used to. Now again, Rajni Karketa goes across and also penetrates the circle. Open way, no defenders, but still Punjab will come back. Reverse attempted. Legs getting tangled along. Oh God, that was a good effort. Let's go back and see that again. That was a very, very good effort there from Alvela Rani Topo, as a card is coming out, I think, for Punjab. Yeah, there's a green card, but look at this. This is the reason. Yeah, that's why, as the legs were tangled in. There's a card there for Alvela Rani Topo. She'll go out for 2 minutes on the green card.
साइड फ्लैंक पर गेंद को लेके आगे बढ़ती हुई नवजोत कौर पंजाब के लिए बैक पास किया था अपनी साथी गुरजीत को वहां पर। अभी भी खेल में उस तरह की गति देखने को नहीं मिल रही है तीसरे क्वार्टर में जैसा आपको होता है खासतौर से पंजाब की तरफ से। यहाँ पर देखिए फाउल करना, मैन हैंडल करना, टैकल करना एक अलग बात है, लेकिन गेम का स्तर ऊपर करना जो यहाँ पर होना चाहिए था पंजाब की तरफ से वो अभी भी देखने को नहीं मिला। They try to do it against Manipur, holding on to possession and then building from the back, just like they're doing right now. Kerala also seem to have a similar strategy, but today the conditions with the ball being very slick on the surface, you will need to increase the pace of your game and the tempo of the game needs to be much more faster. As we see Kerala with a throw in there, Belgin looks to bring in Nijo, who's been a star player for Kerala, of course. Cedric? Well, the weather conditions also, and not to forget that the goalkeepers might have a tough time trying to stop the ball or handle the ball, because that's where all the action is, because if there's a full-blooded shot, there's going to be trouble. As we see a cross coming in, lovely take there from the Kerala lad, Mohammad Ashik. Kerala with the shot from far out wide, not looking to trouble Arjun there, trying that shot from out wide. Harpreet not troubled at all. Well, with the weather conditions, as you say, any shot at the goal might even result into an unexpected goal, because the ball might just slip in. I think that's a very good strategy to employ. Test the keepers early on, see if there are any nerves, because in the previous game when Punjab was playing Manipur, the goalkeeper did have a couple of tough moments, even though he's their captain. As we see the replay once again, Kerala taking the shot, that was Arjun there, taking a shot from out wide, but he wasn't looking to trouble the keeper at all. As that ball goes out of play, Kerala will resume play with a throw-in. Well, Punjab and Kerala leaving nothing to a chance. The first 4 minutes of this match, I think we've seen some very aggressive soccer play. Yeah, early exchanges have seen both teams looking to size the opponent up and ensure that no easy goals are given away, especially in the early exchanges, because you don't want to go down a goal so early in the match. It just puts a lot of pressure on the team. So Kerala and Punjab having made their way to the semi-finals. Kerala losing to services 4-2 in their